Good morning, students. This is Anil Soni, and in the last class, we were studying the methods for solution of system of linear equation. So there are two methods. First one is Kramer's rule or determinant method, and the second one is matrix method. So yesterday our first method, Kramer rule or determinant method, is completed. This method is basically depending on the values of the determinant. Today I am going to start or explain matrix method. Then second method is matrix method. तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इस मेथड में हमें मैट्रिक्स यूज करेंगे. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स मेथड. तो सिमिलरली इन टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो हमें उस वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एंड इफ द इक्वेशन इन द थ्री वेरिएबल्स देन हाउ टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. देन इन टू वेरिएबल्स in two variables में linear equation, standard form of linear equation is ax plus by plus c equals to 0. constant का transpose करेंगे then minus c, and minus c is also a constant. then standard equation a1x plus b1y equals to c1, and second equation is a2x plus b2y equals to c2. okay, then we form the three matrix. then first matrix A, which is formed by the coefficient of x and y, a1 a2 b1 b2. okay, similarly in the Kramer's rule, first of all we form the determinant delta, and delta is formed by the coefficient of x and y. similarly ऐसे determinant बना था, यहाँ हमने matrix A नेम लेंगे. matrix A is formed by the coefficient of x and y. a1 a2 is the coefficient of x, b1 b2 is the coefficient of y, and matrix capital X is a column matrix formed by the variable. okay, capital X is the column matrix. column matrix क्या होती है? a matrix is said to be a column matrix if it have contain only one column. number of rows भी कितनी भी हो सकती है, but number of column हमेशा one ही होना चाहिए. then capital X is the matrix which is formed by the variables in a column matrix. okay, and matrix B is the matrix which is formed by the constant and arranged in the column matrix. so matrix A and matrix A, matrix X and matrix B. matrix A फॉर्म होगी x and y के कोएफिशिएंट से a1 a2 b1 b2. ओके, मैट्रिक्स कैपिटल X फॉर्म होगी वेरिएबल्स से, और वेरिएबल्स को अरेंज किया जाएगा इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स. and matrix B is formed by the constant and it is also arranged in the column matrix. okay, so these three matrices are arranged in the form of A x equals to B. ठीक है, इन तीनों मैट्रिक्स को हम Ax equals to B की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. तो इसको देखिए और क्लियर कर देते हैं. इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? a1 b1 a2 b2 x and y equals to c1 c2. अब देखिए इसको सॉल्व करने पर हमें यही इक्वेशन मिलेगी. कैसे? इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन वी गेट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. देन a1x plus b1y. okay, a1x plus b1y. second row first column से मल्टीप्लाई होगी, then we get the element of second row and first column a2x plus b2y, a2x plus b2y. लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? a1x plus b1y, a2x plus b2y equals to c1 upon c2. then these two matrices are equal, then we compare. then a1x plus b1y equals to c1, this is equation first, and a2x plus b2y equals to c2, then this is equation second. okay, तो इस इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ax equals to b की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. so this is the A, this is x equals to b. so these equation are arranged is in the form of ax equals to b. a को x से मल्टीप्लाई किया जाए, then we get the left hand side and equals to right hand side, and compare करने पर a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2. so these linear equation are arranged in the form of matrix H ax equals to b. then find the value of inverse, then find the value of x.
ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैपिटल X इज द कॉलम मैट्रिक्स इन द वेरिएबल्स, तो हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी, कैपिटल X मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो यहां से मुझे a को रिमूव करना होगा। तो a रिमूव कब होगा, जब मैं इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। देन मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स on both side, okay, a inverse a x equals to a inverse b, okay, a को अपने ही इनवर्स a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, then we get the identity matrix, then I x equals to a inverse b, and the rule of identity matrix is identity matrix को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो मैट्रिक्स जैसी है वैसी हमें मिल जाएगी। ओके, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉलो द प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, देन आई को x से किया, x इक्वल्स टू a inverse b. So this is the formula for finding the variables of linear equation या solution of linear equation. Solution of linear equation में we find the value of variables and matrix x is in the form of variables and x equals to a inverse b. क्लियर हो गया, a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, देन वी गेट मैट्रिक्स x and matrix x equals to a inverse b. This is the formula for the solution of linear equation in two variable by the method of matrix method. Okay, x equals to a inverse b. Okay, noted. a1x plus b1y plus c1z equals to d1. This is equation first in three variable, a2x plus b2y plus c2z equals to d2. Linear equation, a3x plus b3y plus c3z equals to d3, where matrix A equals to matrix A is in the form of coefficient of x, y, z, a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, and matrix x is the column matrix made by variables, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैट्रिक्स x भी कॉलम मैट्रिक्स होगी एंड मैट्रिक्स b भी कॉलम मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स x वेरिएबल से बनेगी एंड द मैट्रिक्स b इज फॉर्म बाय द कांस्टेंट। Then these three equations are arranged is in the form of multiplication of matrix A, X and B. Means जो ये three equations हैं उनको मैं इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी अरेंज कर सकता हूँ। कैसे, तो वो भी मैंने आपको बताया था, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 multiply by matrix capital X, X, Y, Z equals to कांस्टेंट मैट्रिक्स B, D1, D2 एंड D3। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप देखेंगे कि आपको सेम यही थ्री इक्वेशंस मिलेगी। मल्टीप्लाई किया जाए a1x plus b1y plus c1z इक्वल्स टू D1। सेकंड रो को कॉलम से a2x plus b2y plus c2z इक्वल्स टू D2। कंपेयर करेंगे लास्ट में a3x plus b3y plus c3z equals to d3. So we will arrange these matrices are is in the form of ax equals to b, a x and b multiplying by a inverse on both sides. Okay, a inverse a x equals to a inverse b. A is square matrix and A inverse is the inverse of matrix A, और किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, if any square matrix multiplied by its inverse then we get the identity matrix, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए then it's not affect this matrix, then we get the matrix X equals to A inverse B.
Okay, so this is the formula is formed by solving the linear equation in 3 variable or 2 variable by using this formula x equals to a inverse b. Then matrix b is in the given in the question, but a inverse is not given, but we very well that how to be a inverse is find or calculate. Matrix A given है, तो first of all we find the inverse of this matrix. And what is the formula for finding the inverse of any square matrix? 1 upon determinant A adjoint A. So first of all we find the inverse of matrix A by using the formula 1 upon determinant A adjoint A. डिटरमिनेंट ए आपको फाइंड करना आता है, एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना आता है, क्योंकि हमने 5.1 में इनवर्स मैट्रिक्स के काफी क्वेश्चन किए हैं. जैसे ही ए इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, देन वी अप्लाई दिस फार्मूला x इक्वल्स टू a इनवर्स b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इनवर्स and putting the value of b. Then these two matrices are multiplied, and after that we compare and we find the value of variable x, y and z. Okay, not it. So our first question of exercise 5.2 is the question number first, where find the area of triangle by using the determinants and the vertex of the triangles are given below. Okay, there are three questions in first question. The first one is the vertex of coordinate, the coordinate of vertex A is 2 and 5, the coordinate of vertex B -2 and -3, and the coordinate of vertex C 6,0. Similarly यहाँ भी हमें तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, और इसके सी पार्ट में भी हमें द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑफ थ्री वर्टेक्स आर गिवन. तो इन तीन क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. सिमिलरली अपने रिमेनिंग टू क्वेश्चन सेम वे से होंगे. ठीक है, उसी तरह हमें एक क्वेश्चन करना है. देन वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट of vertex A equals to 2 and 5, coordinate of vertex B equals to -2 and -3, and the coordinate of vertex C equals to 6,0. All of three vertices of triangle ABC are given. Then we find the area of triangle by using the determinant method or determinant. Then the area of triangle ABC is, what is the formula? 1 upon 2 x1 y1 1 x2 y2 1 and x3 y3 1, where x1 y1 represents the coordinate of vertex A and coordinate of vertex B is represented by x2 y2 and coordinate of vertex C is represented by x3 y3. मींस जो वर्टेक्स पहले आ रहा है उसको हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को x2 y2 से, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द x3 y3. पुटिंग द वैल्यू x1 y1 2 and 5 1. Okay, x2 y2 -2 -3 and 1, and x3 y3 is 6 0 and 1. अब आप चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस एलिमेंट बिकम्स 0 1 -1 0. देन अप्लाई ऑन r2. r2 is replaced by r2 minus r1 and r3 is replaced by r3 minus r1. बट क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसका सीधा एक्सपेंशन करके भी डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लूं. एक्सपेंड according to first row means R1. Then area of triangle ABC. First row के according expansion करना है. Then 1 upon 2. Okay, 1 upon 2. Then we expand according to the first row and we taking the sign positive, negative, positive. Then we take +2. Then we removing the first row and first column element. Then we removing the first row and first column element and the determinant value of the remaining elements. -3 1 0 1. Okay, then we apply negative sign with the middle element because the sum of rows and column are odd. Okay, then we removing the first row and second column element and the determinant value of the remaining elements. -2 1 6 and 1.
Then we apply positive sign with the last element 1 and the determinant value of the remaining elements when we removing the first row and third column. Then the remaining elements are -2, -3 and 6 and 0. Okay. This is not a mark of matrix. This is a large bracket. Okay. Area of triangle ABC. 1 upon 2. Solve. First of all, you multiply the principal diagonal element और front diagonal element. -3 को 1 से किया, -3 apply negative sign and after that we multiply the back diagonal elements. 0 को 1 से किया 0, -5 -2 को 1 से किया -2 apply negative sign 6 1 जा 6. Okay. +1 -2 को 0 से किया 0, -6 को -3 से किया -18 and +18. 1 upon 2 2 -3 -5 -8 plus 180. Then 1 upon 2 2 3 is 6 -6 5 8 is 40 plus 40 plus 80. देखिए कितना हो गया 1 upon 2 मल्टीप्लाई 40 plus 18 58 58 minus 6 52 and 2 से 52 26 times कट हो जाएगा. then 26 square unit is the area of triangle ABC. Okay, then 26 square unit is the area of triangle ABC. if area of triangle ABC is 0, ठीक है, यदि ट्रायंगल ABC का ये 0 आ जाता है then we can say that points AB and C are collinear. this is the condition for the collinearity of the 3 points. okay, इस तरह के क्वेश्चन भी अभी आएंगे जिसमें हमें ये चेक करना है कि the given coordinate of the vertex ABC are collinear or not. means 3 points are collinear or not. सेम क्वेश्चन ये आपका 2020 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें भी आया था. इसमें 3 पॉइंट्स हमें गिवन थे और हमें चेक करना था कि these 3 points are collinear or not. then by using the area of triangle ABC, then we using the formula of triangle ABC and area of triangle ABC is this and we putting the value of AB and C and if the area of triangle ABC is equals to 0 then we can say that these 3 points are collinear. तो इस क्वेश्चन में बताएं कि ये पॉइंट्स collinear हैं या नहीं है. so area of triangle ABC is not equals to 0. then these 3 points are not collinear and these 3 points are form a triangle whose area is 26 square unit. similarly second and third question इसका आपको करना है. okay, noted. फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह आपको सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही है. मैं यहाँ राइट कर देता हूँ. सेकंड क्वेश्चन है यूज डिटरमिनेंट find the area of triangle whose vertices are 1 4 2 3 and -5 and -3. okay, use determinant find the area of triangle whose vertices are 1 4 2 3 and -5 -3. same question यही है. coordinate of vertex A equals to 1 and 4, coordinate of vertex B 2 and 3, coordinate of vertex C -5 and -3. then we find the area of triangle ABC by using this formula and expand according to the R1. then we get the area of triangle ABC. after that we asking him this is check that this is collinear or not. check that this is collinear or not. तो लास्ट में हमें एक स्टेटमेंट लिखना है
हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ AB एंड C. इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0, then we can say that these 3 points are collinear, and if the area of triangle ABC is not equals to 0, then we can say that these points are not collinear. Okay, सिंपल सेम यही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है, तो then this is the condition for the collinearity of 3 points. Then we can say that these 3 points are collinear, and if the area of triangle ABC is not equals to 0, similarly 26 square unit 0 नहीं आया है, then we can say that this is not a, these 3 points are not a collinear and these points are form a any triangle. Okay, तो ये क्वेश्चन आपको करना